Namaskar. So, welcome to this presentation today. This is a snapshot of the history optional class, which we will be starting soon. And today I'm taking one of the most important parts from history of Odisha, that is King Kharavela. So, obviously, King Kharavela cannot be, completed in half an hour or 1 hour. I'll be only going through the major achievements of King Kharavela today, which we have studied from the Hathi Gumpha inscription. ठीक अच्छे जो थी कि मेनली लिखाई कि तांकर जो 13 वर्ष शासन करथिले 13 वर्ष विषय रे हाथी गुंफा रे दिया ओके ताटू अधिक भी हे पारे बट किंतु जहाँ आम जानूँ तांको विषय रे सही 13 वर्ष सेटा आज आम देखा Caravela in itself is a subject of research and जदि आप कहि परिबा higher studies रे it is a paper in itself okay King Kharavela तेणु आज आम ऑप्शनल रो से गोटे in the main classes okay जो plus classes रोची सेथरे आपनकर mainly it takes around 2 classes for King Kharavela ठीक है तो जोटा कि 90 minutes class होगा माने around 3 hours रोची आमे गोटे तार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आज मु आपन को कहबी ओके हिस्ट्री गोटे बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल डू इट योरसेल्फ ऑप्शनल ओके सो लेट अस फर्स्ट बिफोर दैट जस्ट जो माने नुआ अछंती अनअकैडमी क्यू तांको किछटा जिंस मु कहबा पे चाहूची सो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म रे ओके ओपीएससी एग्जाम एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ओके गवर्नमेंट एग्जाम जोटा ओडिसा रो सब सेथरे आपनकर इंक्लूडेड अछि ओके आउ विभिन्न डोमेन्स रो टॉप एजुकेटर्स एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स एथरे अछंती जो माने कि आपनकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जोड़ा नौचंती सो वेरियस सब्जेक्ट्स जोड़ा कि सब प्रकार रो एग्जाम रे आपनकर कवर होची कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सिविल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज आल्सो अपकमिंग कोर्सेस ओएस मेंस कंपलसरी पेपर्स ओएस मेन ऑप्शनल पेपर्स एएसओ एग्जाम आउ ओके अदर एग्जाम्स आपनकर रहउची तो लाइव क्लासेस डाउट क्लियरिंग सेशन ओके आउ क्विज करिका सब एथरे इंक्लूडेड रहउची जेमति कि आपन गोटे होलिस्टिक प्रिपरेशन हे परिबो तो आ भीतर आपन जदी बहुत तार मल्टीपल ऑप्शंस अछि मंथली 1 मंथ पई अछि 3 मंथ्स पई 6 मंथ्स पई 12 मंथ्स पई और 24 मंथ्स पई मु जोटा रेकमेंड करिवि सेटा 24 मंथ्स रो 2 मंथ्स रो रहबो आ इठी देखंतु नो कॉस्ट ईएमआई ओके सेटा आपन को 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 2 इयर्स पे मिलुची तो आपन ईएमआई रे भी पेमेंट कर परिबे 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 24 मंथ्स रो जो एठी तर देखै छी जति कि अमाउंट ता सेथरे यदि आपन कोड यूज करूचंती एजुकेटर को कोड जेमति कि मो कोड ता हैला नंदा सर लाइव कैपिटल रे नंदा सर लाइव तो आपन को 10% डिस्काउंट मिल जिवो एई पर्टिकुलर ओके फी ऊपर तो ये आपन जो रेफरल कोड से एंटर करार अच्छी तो ये जो 2 वर्ष कोर्स फीटा 8400 जगह इट विल बी 7000 समथिंग ओके सो यूट्यूब रे भी एबे बहुत गुड़े लाइव क्लासेस होची गोटे मेन है कि जो मैंने एएसओ भी प्रिपेयर करूचंती एई रविवार दिन माने 5 तारिख दिन आपनकर गोटे एएसओ मैराथन अच्छी ओके सकाळू खराबेल पर्यंत पूरा एमसीक्यूज बहुत गुड़े एएसओ लेवल रो आपण रहिबो आपण पूरा जेहेतु एबे तो पूरा लॉकडाउन अच्छी तो आपण मैक्सिमम तार यूटिलाइजेशन करि परिबे ओके सो आउ थरे इफ यू आर जॉइनिंग यू कैन यूज माय रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स रे नंदा सर लाइव NANDASIR LIVE नंदा सर लाइव ओके नाउ लेट अस गो टू आज जो हमको पढ़ियार अछि दैट इज हिस्ट्री ऑप्शनल रो महामेघवान ऐर खारवेल ओके एटा तांकर पूरा ना तांको आउरी बहुत जिंस ऐड करावे तांको ना रे ओके द मोस्ट इलस्ट्रियस किंग ऑफ कलिंग बिफोर स्टार्टिंग जदि कहार कोन क्वेश्चंस अछि ताले आपण चैट विंडो रे पचारि परिबे I'll just look for the questions if any okay fine if you have any question related to history optional ताले आपण ए चैट विंडो रे ओके पचारि परिबे I'll be answering your questions okay so let us go to our so Aira Maharaja Mahameghavana Caravela was one of the greatest kings of ancient India.
He was the first great historical monarch of ancient Kalinga who belonged to the soil and styled himself as Chetaraja, Vamsavardhana and Kalingadhipati. Okay, तो एटा किछिटा टाइटल्स जोटा से नहीं थे, राइट. His personality is known from the Hathigumpha inscription. ताको विषय रे जहाँ सबू आमे जानूचु सेटा हाथीगुम्फा inscription. Okay, सेठू आमे जानूचु जोटा भुवनेश्वर रे अछि हाथीगुम्फा inscription. He belonged to the Chedi or the Cheti dynasty. ताको जो dynasty थिला Chedi और Cheti dynasty की belong करथिले. So first as a crown prince, जदि आमे ताको life history टा देखिबा, the crown prince हिसाब रे at the age of 15 Caravela became the Yuvaraj or the crown prince to assume the burden of royal responsibilities. Okay, तो just जानिया पाई कि केमती आगु को जाएंगी से राजा है बे, तो crown prince 15 age रे, okay, he became the Yuvaraja or the crown prince. By that time he was already proficient in 5 main subjects, namely lekha or writing, rupa or coinage, ganana or arithmetic, vyavahara or law and vidhi or procedure. जोटा कि आगु को जाएंगी, ओके, गोटे राजा को पाई निहाती भाबे रे दरकार ए सबु एट्रिब्यूट्स, ए सबु क्वालिटीज थिबा दरकार. तो युवराज स्टेज रे ही ताको एटा सिखा जायतिला. He also had knowledge in various other arts. तो आगु को देखिबा he was a versatile artist also. Okay, तांकर आर्ट ऊपर भी तांको नॉलेज थिला, सॉन्ग्स ऊपर भी नॉलेज थिला. Caravela worked as crown prince for 9 years. The 15 years से start कले 9 वर्ष. After completion of 24 years of life, he was crowned as the king of Kalinga when he crossed the age of minor. Okay, so 24 जेतल तक हैला से Kalinga the king हैले. He began his glorious rule as the king belonging to the third generation of his royal dynasty. ताकर जो Chedi dynasty रो से third generation थे. So as the king से कौन करथिले बहुत तो जिंस अछि, but in a short time of 30 minutes मेन जिंसटा जतले खारवेलंकर क्वेश्चन किछि भी पडिबो आ एई क्वेश्चन टा रहइबो कि खारवेलंकर अचीवमेंट कोन सब बेले मन रखिबे. जीएस रे हो कि हिस्ट्री ऑप्शनल रे तो डिटेल रे लिखिया पडियो जेंति हमें डिस्कस करछु. इवन इन जीएस 13 रेनल इयर्स टा मेंशन करियार अछि. ओके, दैट मींस 13 इयर्स ऑफ रेन ऑफ खारवेला. ठीक अछि, तो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे 13 वर्ष ही देछि. मे बी से आउरी भी बहुत टाइम रूल कर पारथिबे, वी डोंट नो, बट हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे 13 वर्ष ही दियाछि. सेटा रिकॉर्डेड अछि. तेनु एई 13 वर्ष रे से कोन कोन करथिले सेटा आपनको ओके जणिया पे पड़िबो. As the king of Kalinga, Kharavela immediately turned his attention to the fortification of his capital city of Kalinga Nagari. The capital, which was earlier damaged by a severe storm, required repair and reconstruction. तेणु एटा मन रखन तो नोट्स करिवे ताले ईयर वाइज करिवे. फर्स्ट ईयर रे कोन हेतला, सेकंड ईयर रे कोन हेतला. सो फर्स्ट ईयर रे कोन हेतला, thus in the very first year after coronation he repaired the gates and ramparts, okay, जोटा कि entrance points जोटा, and the structures of fort of Kalinga Nagari. He also improved the condition of tanks and gardens for the beautification of the city. The cost of construction of such work has been stated in the Hathigumpha inscription as 3500,000. Okay, so 3500,000 तांकर खर्च हैला. The king pleased his subjects by his works of public welfare. तो फर्स्ट ईयर रे जो सब भांगी जाइतिला, ओके, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेरिका ताकू ठीक करागला. एटा फर्स्ट ईयर. Before the time of Caravela, under the earlier Mahameghavana kings, the army of Kalinga was strong and big. Caravela, after strengthening his capital, enlarged that army. तो आउरी तांकर आर्मी को से बढ़ेले, स्ट्रांग आर्मी गोटे थिला, जोटा कि हमें मैप रे देखिबा the extent of the okay Caravela's kingdom, ताले आपण जानि परिबे. In the second year of his reign, he could prove the might of Kalinga forces by military invasion of the south. South को attack कले. According to Hathigumpha inscription, Caravela, without caring for power of the king Satkarni, sent his large army westward. It consisted of horses, elephants, infantry and chariots. The army struck terror to the city of Asika and marched victoriously as far as river Krishna. Okay, एटा किछि जन हिस्टोरियंस ताको डिस्प्यूट करंती कि सीए सतकर्णी को हराई थिले कि नहीं. ओके, बट ही वेंट फॉर ए साउथ एक्सपेडिशन सेकंड ईयर रे ताको एटा माइंड रे रखिबे.
आर डिटेल्स कहीं जो जे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ो यही पार्टा प्रॉपर्ली जानवर अच्छी कौ हिस्टोरियन से माने बिलीव करती कि सतकर्णी को हरई थे खारवेल आउ जहाँ जो प्रूफ्स अच्छी ओके से आम कौन टा जापरु कि सातवाहना किंग्स जो मैंने थे ओके आड़ू तांकर जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी जो इनस्क्रिप्शंस अच्छी से कौन कह तो सहीटा आम डिटेल्स देखा जो एक्चुअल क्लासटा ओके स्टार्ट करवा हिस्ट्री ऑप्शनल थर्ड ईयर एटा सेकेंड ईयर गला साउथ एक्सपेडिशन ठीक है तो फर्स्ट ईयर रे पब्लिक वेलफेयर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड ईयर है साउथ एक्सपेडिशन ठीक है थर्ड ईयर रे खारवेला एंटरटेन द पीपल ऑफ कलिंगा नगरी इन द थर्ड ईयर ऑफ हिज रेन तो से जेहेतु से कही कि हम विक्टोरियस होकी आसी तो ही वाज हैप्पी एंड ही स्टार्टेड टू हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स और लोगों को प्लीज करने पे लगे बिकॉज ही वाज आल्सो ए गुड आर्टिस्ट द किंग हिमसेल्फ वाज वेल वर्स्ड इन गांधर्व वेद और द आर्ट एंड साइंस ऑफ म्यूजिक that speaks of Caravela as a patron of India's ancient musical tradition. In order to please the population of his capital, he arranged festivals and feasts on a large scale. Various performances like dancing, singing and playing of vocal and instrumental music were presented. He made Kalinga Nagari as if a city of pleasureful play. Okay, so third year re kon hela na celebrations type ro apan koi paribe. Okay. Fourth year of his reign, Kharavela consolidated his position in a territory named Vidyadhara, which according to the inscription was established by earlier kings of Kalinga but had never been crushed before. It might mean that a turbulent area within the kingdom or its border was crushed and subdued. Fourth year re seta gote part. Second, fourth year re aur bhi kichh jinsh hoichi. In the same year, Kharavela launched his second invasion on the Satavahana kingdom. His first invasion perhaps did not end in conclusive results and therefore a more determined effort was necessary to conquer the western and southern region of India. This campaign resulted in great victory for the Kalinga forces. Again, this is disputed okay, by the historians जे कि Satavahana history को पढ़ी चंदी और Satavahana okay, तांकर जहाँ inscriptions अच्छी तो again आपको आउरी डिटेल रे पढ़िया पड़ियो तेणु फोर्थ ईयर रे दीटा जिनस मन रखिबे ए जो विद्याधर okay, which was kind of a rebel territory that was subdued and second okay, invasion or expedition to the south was launched in which Caravela says that he won a great victory against the Satavahanas. Okay, fifth year tapare asibo. In the fifth year of his reign, Caravela once again turned his attention to development of his capital. A canal which has been dug up by Nandaraj. Okay, so Nandaraj is basically Mahapadmananda. Okay, so Mahapadmananda also he made some what you can say irrigation facilities here. Okay, this was kharab hai jaytila. Okay, was extended to flow into Kalinga Nagari through Tanasuli. Tanasuli most probably was Toshali and Kharavela might have extended the canal to his expanding capital by way of the old city of Toshali. Okay, so fifth year re kon na irrigation facilities aguru joda thila Mahapadmananda joda करिथिले सेटा ओके से आउथरे ताकू ठीक ठाक कले. नेक्स्ट सिक्स्थ ईयर ऑफ Caravela's rule saw his great charitable activities for the satisfaction of his subjects. These benevolent measures were meant for both the urban and rural population of the empire. He remitted all taxes and cesses to the extent of many thousands of coins. It was like a display of wealth of the king which was meant for the happiness of the people. Okay, तो सिक्स्थ ईयर रे चैरिटी कले से ओके टैक्सेस छाड़ी देले ओके ही गेव गिफ्ट्स जो मान को नीडी लोगो तांको आउ सब्जेक्ट्स मान को ही डिस्ट्रीब्यूटेड ओके लॉट ऑफ गिफ्ट्स. सेवेंथ ईयर रे इन द सेवेंथ ईयर Caravela's chief queen named as Queen of Vajiraghara gave birth to his son. Okay, the seventh year day it is something related to his personal happiness. Okay, his queen, the queen of Vajiraghara, gave birth to his son. In the 8th year of his reign, Caravela began his military campaign in the north. तो south रे तो military campaign अपन देखिले. 8th year रे north रे military campaign. Okay, he started. Okay, because
Magadha was his biggest enemy in a sense that जो Magadhan rulers ଥିଲେ महापद्मानंद के तापर later on धनानंद and all महापद्मानंद Nanda kings mainly ସେମାନେ attack କରିକି because Kharavela was a Jaina devout Jaina ତ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଜିନଟା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓକେ କଳିଙ୍ଗରୁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି later on we will study he took it back from ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଓକେ ଯେ ସେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଖାରବେଳ ଓକେ in the 8th year of his reign Kharavela began his military campaigns in the north his armies marched towards the ancient city of Rajagriha okay Rajgir chota hai Bihar mein the fort of Gorathagiri which stood to protect Rajagriha was stormed and destroyed the fort of Gorathagiri identified with modern Barabar hills was like a military fortification to protect the capital of Magadha, that is Pataliputra. When that strong fortification was demolished and the city of Rajgriha was brought under the control of Kalingan army, the people of Pataliputra were struck with fear and terror. At that very time, the victorious army of Caravela was advancing towards Magadhan capital. The Indo-Greek invaders, Yavanas bane, under their king were advancing towards Magadha. The Yavana king was already in occupation of Mathura and he thought of invasion of Pataliputra. तो ये जो मथुरा टा भी जैन मानों को पाई बहुत गोटे significant और religious place थिला से टाइम में. Okay. Unfortunately, the name of Yavana king has so much been damaged in the Hathigumpha inscription that his identity has not been established. Caravela's northern expedition, so basically कौन है तापरे Caravela again he turned okay towards the Yavanas and the Yavanas fled. Now tapore he came back okay he got the Kalinga Jina from Bryhaspati Mitra Magadhare and he came back to Kalinga. So it was a grand success. Kalinga's northern expedition was thus a grand success. He had shown his power to the Magadhan people and also to the foreign power. Foreign power kya the Yavanas, the Greeks. Okay, by his victories over them. So in the 9th year of his rule, so 8th year kala, okay, the मन रखिए से राजा को नाट अभी मन रखिए बृहस्पति मित्र, okay, जाटू कलिंग जिनाटा आनिले से. It was taken by Mahapadmananda. So in the 9th year of his rule, Kharavela built in his capital Kalinganagari the great victory palace or the Mahavijaya Prasada to make his achievements memorable. That palace was constructed at cost of 38,000 coins. Okay, at the 9th year. So he celebrated his victory. In the 10th year of his reign, Caravela once again led his army to the north, describing it as march towards Bharatvarsha for conquest. Okay. The second invasion of the north also ended in victory and success in the 11th year of his reign, the 10th kala 11th year. Caravela received jewels and precious stones from his defeated enemies. That year, he caused to be cultivated a place named Pithunda, which had been founded by some former king of Kalinga. In that 11th year, so continuing with 11th year, Caravela achieved a great military victory in the south. A confederation of the Tamil states in south, consisting of territories of Cholas, Pandyas, Satyapuras, Keralaputras, and the Tamraparni, that is Ceylon, existed at the time of Caravela, and Kalinga ruler thought it necessary to break its power for its own hegemony in the south. It is known from the Hathigumpha inscription that this confederation has maintained its political unity for 1300 years before the time of Caravela, and that it contained many Janapadas teeming with village settlements. Okay, so again 11th year southward expedition, right? In the 12th year of his reign, Caravela took up the third invasion of north. It was a more powerful military expedition than the earlier ones. According to Hathigumpha inscription, Caravela terrorized the king of Uttarapata, okay, by an army of 100,000. His soldiers entered into Magadhan territory and generated great fear among the people of Magadha while making the elephants and horses drink in the Ganges. Caravela forced the ruling king of Magadha, that is Bryhaspati Mitra, to surrender, and he paid
obeisance at the feet of the victor ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କଠୁ ସେଟା ନେଇକି ବି ଆସିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ। So in the 13th year, the last year ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, in the 13th year of his reign, one finds him as Upasaka Sri Kharavela as described in the Hathi Gumfa inscription. Even in that year, when Caravela was putting an end to his rule as a conqueror, the king of Pandyas bought from the south various pearls, jewels, and precious stones, hundred thousands in number, to be deposited at the feet of Caravela in his capital, Kalinganagari. Okay, तो 13 वर्ष पर आउ details हमको मिलूनी. The Hathi Gupta inscription suddenly closes itself by describing the religious activities of Caravela in the 13th regnal year. That year, therefore, is taken as the last of Caravela's reign. He might have lived for long after giving up his kingship, but while devoting his years to religious activities. But the accounts of that part of his life have not survived for future. Okay, तो 13 regnal years to हाथी गुम्फा inscription रे एटा आपनको 1 2 3 4 करिके लेखिया पे पड़िबो. ओके, एटा बहुत ही बड़ रहइबो, लाइक जो एटा 60 मार्क क्वेश्चन टा आ 60 मार्क क्वेश्चन हमको फिगर्स दा पे पड़िबो, तो एई फिगर टा भी बहुत ही इंपोर्टेंट. दैट इज okay, the King Kharavela's empire. Okay, 185 BC. This was the extent of the empire. You can see, okay, huge empire that was built up by King Kharavela. Okay, so if you have any doubts regarding this, you can ask me. Okay, Sunil is asking which book we should follow for ancient and medieval history for history optional. देखो तो ancient history जदि आपण देखिबे history optional पाई ताहले दी तीनटा जिंस अछि जोटा कि आपण को माइंड रे रखा पड़िबो. ancient history रो बहुत गुडे बही अछि, ठीक अछि. आपण जदि GS लेवल रो बही पढ़िबे मे बी optional पाई सेटा ठीक हबनी. ओके, दीटा अलगा अलगा सोर्स मु कहबी, डिपेंड्स आपण पाखे केते समय अछि. बेस्ट सोर्स जदि कहबे एंशिएंट इंडिया रो, ओके, आरएस इंडियाज एंशिएंट पास्ट गोटे अछि बाय आरएस शर्मा, जोटा कि एनसीईआरटी बही रो प्राय पाखापाखि सेटा सेम अछि. ताठू आउरी डिटेल को जदि जिबे ताले महाजन वी.डी. महाजन, ओके, एंशिएंट इंडिया सेटा हला सुल्तान चंद पब्लिकेशन रो, सेटा बहुत डिटेल. धरंतु मो पाखे समय नाही किंबा मु माने एते वी.डी. महाजन इज ए कौन कहबी सेटा, इट्स ए क्लासिक टेक्स्ट बुक, ठीक अछि. तो सेते पॉइंट्स न दिया पारे, से सब जिंस लिखिछि विपिन चंद्र भलिया आपण पूरा बहिटा पढिया पड़ियो. एते औसा मोटा बहिटा सेमति मेडिवल रो गोटे अछि और मॉडर्न रो गोटे अछि, वर्ल्ड हिस्ट्री रो गोटे अछि. ओके, हमर हिस्ट्री ओडिसा रो गोटे अछि. पांचटा बही एमति तो प्राय पढिबाटा कष्ट होइछ आपण में. तेनु सबटु बेस्ट हला इग्नोर नोट्स टा फॉलो कर देबे. फ्री रे मिलुछि सेटा इग्नोर वेबसाइट रे कि इंटरनेट रे आपण बहुत सोर्सेस टू पाइ जिवे. हिस्ट्री पाई इग्नोर नोट्स टा भलो. ओके, सब जिंस आपण जहां हिस्ट्री रे अछि सब मिल जिवो. खाली हिस्ट्री ऑफ ओडिसा टा आपण टिके आउ इन डेप्थ नॉलेज पाई सेटा हिस्ट्री ऑफ ओडिसा बाय हरिहर पंडा सर, सेट बहिटा आपण पढिया पड़िबो. ओके, तो एंशिएंट पाई भी सेटा हबो. ओके, दैट इज वी.डी. महाजन. मेडिवल हिस्ट्री पाई भी सेटा हबो वी.डी. महाजन. ओके, तो बहुत भलो रे डिटेल्स रे देछि, ठीक अछि. तो नहले बहुत बुक्स अवेलेबल अछि. आपण जीएस पाई जा पढुछन तंत्र कहू एनसीईआरटी पढि कि जिबी फाइन, आपण नॉलेज थिबो, बट टिके डिटेल्ड को जदि डिटेल्स को जिवा कथा, आइदर यू चूज वी.डी. महाजन और यू चूज इग्नू. जोटा आपण बहुत पिला इग्नू टा भल लागे काइना से पॉइंट वाइज दे थाए, ठीक अछि. त सेटा सुविधा. ओके, सो एंशिएंट और मेडिवल पे से दीटा सफिशिएंट हबो. तापर हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी अछि. वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगेन सेम थिंग, वर्ल्ड हिस्ट्री वी.डी. महाजन टा भी भलो. वर्ल्ड हिस्ट्री जदि आपण पूरा खाली पॉइंट वाइज देखि दबा पे चाहउछंती ताले नॉर्मल लोएंगर भी वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 माने बुक 1 और बुक 2 ओनली द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. पूरा वही पढ़िया दरकार नहीं, हम सिलेबस रे अछि सेटा पढ़ितले हबो. ओके, न ता पई भी इग्नू नोट्स आर सफिशिएंट. शक्ति प्रसाद व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप इज बेसिकली केना एटा तो ओपन प्लेटफॉर्म टा जो माने जॉइन करूछन प्लस तो आपन सेठी फोरम अछि जोटी आपन क्वेश्चन करिका पचारि परिबे. ओके, तो एठी आपन चैट रे क्वेश्चंस पचारि परिबे, किछि प्रॉब्लम नहीं. यू कैन आस्क इन चैट, राइट. तो हिस्ट्री रो दी तीनटा जिंस मन रखिबे. हिस्ट्री बहुत जण कोनती बहुत ही वास्ट, ऑब्वियसली इट वास्ट,
किंतु सेटा आपन समय कमेइबो केमति कहले नेट आपनकर प्रिपरेशन रो 20% आपनकर जीएस रो सरी जिवो एतरे 20-25%। ओके हिस्ट्रीटा भलरे पढि देले हिस्ट्री पई जेमति कि ए जो लास्ट आमे जो एटा तो हमको मेंस आंसर रे एटा लिखिया पड़िबो ना तो फ्री हैंड स्केच आपण जानिबा दरकार फ्री हैंड स्केच ओके तेणु आप इंडिया रो स्केचटा कले तापर एई पार्टटा देखिले एटा खारवेला को एम्पायर ठीक अछि तो एटा तो 60 मार्क क्वेश्चन तो खाली गोटे फिगर कले होबनी दी तीनटा फिगर करिया पड़िबो तो सेटा जेतेबेले आमे सेई पोर्शन को जिबा म कहबे सेटा ओके so any other doubts if you have you can ask तो I think 9th और 16th रे गोटे दिन ज्योग्राफी गोटे दिन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट हो जिवो ओके और पर दिन जो माने एएसओ हरिका प्रिपेयर करछन इवन ओपीएससी प्रीलिम्स भी प्रिपेयर करछन अनएकेडमी रे गोटे एएसओ मैराथन होची ओके सो सकाळू स्टार्ट हो जिवो जस्ट देखंतु ओपीएससी अनएकेडमी रो ओपीएससी लाइव यूट्यूब चैनल टा तो सेथरे आपन को डेट्स करिका टाइम करिया मिलछो डेट इज 5th of April ए संडे दिन ओके any other questions you would like to ask ताले मते पचारि परिबे else we'll end the session one question on खारवेला देखंतु ओडिसा हिस्ट्री रे जो हिस्ट्री ऑप्शनल रे क्वेश्चन आसीबो से जेते वर्ष जो वर्ष भी हो हमें जानि परिबा कि खारवेला को ऊपर गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन जेमति भी हेले आसीबो तो ये जो 13th रेनल ईयर का ओके 13टा रेनल ईयर जोटा रोची सेटा आपण प्रॉपर्ली जानिबार अछि तो गोटे शॉर्ट नोट बने देबे तार ओके सेथरे ईयर 1 पॉइंट रे खाली ए दी टाइम्स आइतला तापर पॉइंट आपण एलाबोरेट करिवे ओके सो with that we'll stop and best wishes for your preparation आपणकर संडे दिन जोटा कहली एएसओ मैराथन गोटे हम आई थिंक सकाळ 8टा कि 9टा सेटा स्टार्ट होची अप टू 2टा पर्यंत चलिबो सेटा 2टा कि 3टा पर्यंत सो यू कैन गेट द डिटेल्स ओके जहाँ जहाँ सब सब्जेक्ट्स अछि एएसओ रे जा पढिबो ता पई आपणकर एमसीक्यू टेस्ट करिका रहबो ओके सो बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू